Recording session. The concept is tangent to a circle. Okay, देखो tangent to a circle is tangent is a line. Tangent is a line. लिखो जल्दी जल्दी लिखो. Tangent is a line which cuts the circle at one point. ठीक है. Tangent is a line which cuts the circle at one point. फिर लिखो secant is a line which cuts the circle in 2 points. Secant is a line which cuts the circle in 2 points. ठीक है. फाइन. अच्छा, अभी ना मैं अर्पिता से पूछता हूँ. ठीक है. अर्पिता, ये डायग्राम बना रहा हूँ मैं. ठीक है. ये सर्कल है. ठीक. ये सर्कल का सेंटर है. तो और एक मैंने लाइन बनाई और ये लाइन को ना मैं उठा के चेंज करता रहूंगा. ठीक है. देखो. ओ सॉरी. अर्पिता. हाय अर्पिता. हेलो. दिस लाइन अभी क्या है? ये सीकेंट. अभी क्या है? जोर से बोलो. जोर से बोलो. secant. ठीक है. बट ये तो 3 पॉइंट पे काट रही है ना. ये तो 2 पॉइंट और फिर सेंटर पे भी काट रही है सर्कल को. तो ये सीकेंट हुई क्या? No. No. Actually, I was lying. It is not cutting at 3 points. Center is not a point on the circle. Okay. It is only cutting at 2 points. Does this secant has a special name? No, sir. Diameter है ना ये. ओके. अभी क्या है ये? Secant. अच्छा, अब क्या है? Tangent. या. ठीक है. Has everyone got it? अच्छा, अब मुझे ना गर्वित इसका आंसर बताएगा. डिस्टेंस ऑफ secant फ्रॉम सेंटर. और सर्कल का रेडियस r है. ठीक है. डिस्टेंस d ऑफ secant फ्रॉम सेंटर कितना होता है? So that is also radius. दैट इज रेडियस. वाह वाह बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो. secant का डिस्टेंस सेंटर से कितना होता है? ये secant है, इसका डिस्टेंस, ये secant है, इसका डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस होता है. ठीक है. सेंटर से कितना होता है? अगर सर्कल का रेडियस r है तो डिस्टेंस फ्रॉम द secant कितना होता है? कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. So that will be less than r. यस, d लेस देन r. जल्दी से नेक्स्ट. डिस्टेंस d ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेंटर. तुम लोग ठीक से लिखना. ठीक है. So tangent, should I tell? यस यस. So tangent should be a radius only because it इक्वल टू r. वेरी गुड. इज एवरीवन गेटिंग? जीवते समझ में आ गया ये? ठीक है. अच्छा, ये जो लाइन बाहर से पास होती है ना, इसका नाम पता नहीं क्या है. मतलब आई डोंट नो इसको क्या नाम बोलते हैं. तुम्हारी बुक में अगर है तो बता दो मुझे. आई डोंट थिंक इट इज अ स्पेशल नेम आल्सो. तो ये जो लाइन है विच इज d मोर देन r, वो बाहर से जा रही है. ठीक है. इट इज नॉट कटिंग द सर्कुलर एंड पॉइंट. फाइन. ठीक है ना? ठीक है. अच्छा, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उल्टा. अब उल्टे तरीके से क्वेश्चन पूछता हूँ. सुहानी, हेलो. Yes, sir. There is a line whose distance from the center is more than r. Okay. Yes, sir. The line at it's got the circle at how many points? So distance. So can you repeat once? There is a line whose distance from the center is more than r. Okay, sir. It cuts the circle at how many points? Sir, 2.
Jivitesh? Sir, it will be 0 because then the line is not touching the circle at all. Suhani, have you understood? Yes, sir. Okay. Jivitesh, if a line cuts the circle if the distance of the line from the center of the circle is equal to r, at how many points it cuts the circle? Unique. How many points? Sir, 1. करेक्ट. ठीक है, ठीक है. ओके. अभी एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, आपको इतना सबको समझ में आ गया ना. दूसरा ये है, if a point p, if a point is exterior of the circle, how many tangents can you draw from it to the circle? Sir, can I tell? बता दो, बोल दो. 2. ठीक है. If a point is on the circle, how many tangents can you draw from it? 0. 0 नहीं, 1. अच्छा, जब from it मतलब, अच्छा, हाँ, यहाँ Understood. देखो, ये दो tangent है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है. और if a point is on the circle, ठीक है, O is on, या फिर n point is on the circle, then you can make ऐसे एक tangent बन this, okay? ठीक, one tangent, fine. I hope this is clear to everyone. And if a point is inside it, inside the circle, then 0. Sir, then no tangents. yes, 0 tangents. अच्छा, एक चीज और, how many tangents can you draw from the center? 0. So 0. Okay. Is there any tangent which passes through the circle? No. Is there a tangent which, if I make a radius, okay, if I make a radius, एक random radius बनाया मैंने, कहीं तो बना दिया यहाँ पे, ठीक है. Number of tangents which intersect this radius, 0. So 1. एक होगा ना. No, so intersect the radius means it passes through, right? और ठीक है, तो definition wise we are different, but concept you understood, no? Yeah, it'll pass through the point ठीक है. on the circumference of मतलब the बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये था कि फ्रॉम एवरी रेडियस देयर इज अ यूनिक टेंजेंट. एक रेडियस को एसोसिएटेड एक ही टेंजेंट होता है. yes, sir. एसोसिएटेड मतलब मैं जब बोल रहा हूँ तो एसोसिएटेड मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक. Yeah, yes, sir. ठीक है. Very good. And now see, now my next question is the tangent perpendicular to the circle? This is an absurd question. इस क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं है ना, क्योंकि सर्कल कुछ नहीं होता ना. मतलब tangent is not perpendicular. tangent किसके perpendicular है? Sir, radius. रेडियस के ऊपर, ठीक है. tangent किसके perpendicular है? रेडियस के. ऐसे नहीं बोलना tangent is perpendicular to the circle, okay? Fine everyone, लिख लो tangent is perpendicular to radius. Okay, very good. ठीक है. अभी एक प्रूफ आता है कि ये प्रूफ करना होता है कि tangent is perpendicular to radius, ओके. तो पहले प्रूफ करने से पहले बस समझ जाओ व्हाट इज परपेंडिकुलर, ओके. लिखो. देखो, there is a point P and there is a line L. फटाफट लिखो. There is a point P and there is a line L. There is a point P and there is a line L. Bracket में लिखना, point P is not lying on line L. Point P is not lying on line L. Then only our discussion is valid, okay? What we are going to discuss. ठीक है बच्चों? Yes, sir.
जी हाँ, अब सुनिए क्या करना है। पॉइंट पी लाइन एल हो गया। अभी a line which starts from point P, a line which starts from point P and makes an angle 90 degree with the line L is called perpendicular. A line which starts from point P and makes an angle 90 degree with line L is called perpendicular from the point P to the line L. The word is important, the wording की perpendicular from the line, तो वहां पे from लिखना है, from the line, from the point to the line, ठीक है, from the point to the line, it is called perpendicular. Okay, तो ऐसा होता है। तो वैसे to understand it you can think of it like this, तुमने P से बहुत सारे लाइंस बनाई, ठीक है, उसमें से ये अलग अलग एंगल पे गिरेंगे ना, इस पे ये कुछ 110 डिग्री, एक 100 डिग्री, एक 90 डिग्री, एक 85 डिग्री, राइट, एक 60 डिग्री। So there are many infinite lines, right, अलग अलग एंगल पे। तो अच्छा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, how many lines are there which make an angle 60 degree with the line? One, or you can also say two, because if you say मतलब दोनों साइड के एंगल इंक्लूड कर रहे हो ना। Yeah. How many lines which make an angle 70 degree with the line? Two. How many lines are there which make 90 degree with the line? So one. One. तो इसी लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, ठीक है, समझ में। फिर ये देखो परपेंडिकुलर इज यूनिक, देयर आर नो टू परपेंडिकुलर्स। ओके, ठीक है। अभी the point where the perpendicular joins the line is called F. It is called foot of perpendicular. It is called foot of perpendicular. ठीक है, Yes. So now, right? Okay, so the question ऐसा आता है कि prove that इसमें the theorem is कि tangent is perpendicular to the radius, ये prove करना होता है, ठीक है। तो let us start proving it. Prove that tangent is perpendicular to radius. Okay, and your homework is you have to write this theorem, okay, from RS. You have to write this and give it to me, okay. This homework writing here, I'm just explaining you quickly. अच्छा एक चीज और है, जो ये डिस्टेंस होता है ना, ये शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये मतलब डिस्टेंस PF is the least distance, okay, all other distance will be higher. You can prove it by simply, देखो तुम ऐसे बोलो कि अगर एक ट्रायंगल ऐसे बनाया है तुमने, देखो एक ही का 90 है, बाकी कोई और दूसरा है, let's say if you make a triangle PFK, ठीक है, then this is 90 and this is less than 90, right, and this is 90 and this is less than 90 in this triangle, okay, then of course the side which is opposite to a smaller angle is smaller and side which is greater angle is greater. So ये एंगल कम है 90 से, तो ये साइड भी छोटा है, और ये एंगल ज्यादा है मतलब 90 है, तो ये साइड भी बड़ी है। समझ में आया? yes. So तो इट you can use it for any triangle and show that ये 90 से तो जितना भी एंगल ये कम ही होगा सारा का सारा, तो ये वाला साइड सबसे छोटा होता है, ठीक है। अंडरस्टूड, फाइन। अभी how to prove that tangent is perpendicular to radius? अब सर्कल बनाओ,
क्या बन गया ये? इसको टेंजेंट बना देते हैं। टेंजेंट है ये, और तो ऐसे बोलते हैं कि लेट्स से ये पॉइंट P है और ये पॉइंट है Q, ठीक है। और फिर प्रूव करना है, टू प्रूव दैट OP is perpendicular to AB, where AB is this point. AB. But to prove that OP is perpendicular to this, let's say देखो इसमें let's say OP is not, मतलब कैसे प्रूव करते हैं, how do we prove कि let's say there is another point Q जो tangent पे है, and you join OQ, then the length of OQ is, the length of OQ is considered of two parts, एक तो radius plus some extra quantity, right? Whereas length of OP is only radius. Okay, so because the length of OQ, any point Q, any other point if you take Q, उसका length ज़्यादा है radius से, right? Because always it is outside the circle. Q will always be a point outside the circle. And if you join OQ, you will always have a length more than R, because always there is some extra. Okay, therefore OP is the least distance, right? And if OP is the least distance from the line to the point O, then OP is the perpendicular, right? Understood? Have you understood the logic or no? Yes, sir. Everyone, Arpita, Advik, can you hear me? Yes. Yeah, I can't hear you. Speak loudly. Okay. Then there is converse of theorem. You read about it. Okay. And then there is theorem. हाँ, there's एक theorem है, tangent from the sectional point are equal. देखो इसको कैसे करते हैं. What is ये theorem? एक सर्कल बनाया, एक पॉइंट A लिया जिससे tangent बना रहा है, ठीक है, और ये पॉइंट सेंटर है, ठीक है, और इसके दो tangent बनाए, these are tangents, एक T1, AT2 is the next tangent. आप क्या करो, ये दोनों जोड़ दो. सुहानी, what can you say about the angle OT1A? OT1A. So OT1 A, A. that angle. Sir, that would be 90 degrees. Very good, 90 degree. OT2A. Sir, that would also be 90 degrees. ठीक है, ठीक है. अब इसके बाद क्या करना होता है, ट्राइंगल, जो दो ट्राइंगल है ना, ऐसे बस जोड़ दो. फिर क्या करना होता है, अरे अरे क्या हो रहा है, So I'm sorry, why is it 90 degrees? क्योंकि रेडियस है ना वो, Okay, and और oh, it's perpendicular tangent, right? 81 टाइम पता नहीं क्या है, वही वही जैसे, ठीक है, नहीं. तो बस दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होते हैं, AT1 हो और AT2 हो, जिसमें कि वो 90 डिग्री हो जाते हैं, ये फिर ये साइड कॉमन हो जाती है और ये वाला दोनों साइड रेडियस होते हैं. तो बाय विच कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन आर दे कॉन्ग्रुएंट? For RHS. गुड, RHS से कॉन्ग्रुएंट है, तो इनका सब कुछ इक्वल हो जाता है. फिर ये देखो, ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं, थीटा थीटा, ठीक है, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, फाई फाई, ऐसे लिख लो, ठीक है, लिख ही लो भाई यहाँ पे, ये थीटा थीटा बराबर है, ये फाई फाई बराबर है, और तो कुछ, तो देयरफॉर ये भी सिटी से AT1 इसको ये भी बराबर है, ठीक है, सब कुछ बराबर है, सिमेट्रिक है पूरा, ठीक. अंडरस्टूड? So is there a way to prove that there are only two tangents from a point outside the circle? There are only two tangents that it can make on a point on the circle. Is there a way to prove that? Okay, let's say there are three tangents. Okay, ऐसे ही करते हैं ना? Yeah. ठीक है. Excuse me, sir. Yes, yes.
Can I log off? I'm not feeling well. Okay. Thank you, sir. हाँ तो So let's say there are three tangents. एक्चुअली मैं सोच रहा था, तुमने जब पूछा तो उल्टा सोचो, इफ यू टेक 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, Hmm. तो तुम ये तो अग्री करते हो कि एक पॉइंट ऑन द सर्कल से एक ही टेंजेंट बनता है। Yeah. अगर तुमने 2 पॉइंट लिया तो तुम्हारे पास टोटल 2 ही लाइंस आई, Yeah. और 2 लाइंस आई तो उनका इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट हो सकता है। Yeah. उसका मतलब है कि एक ही पॉइंट मिला ना। Hmm. हाँ तो Then you just have to reverse that logic. हाँ हाँ कि एक एक पॉइंट से, पता नहीं, आई थिंक टू प्रूव, आई मीन to show it, let's say I'll just try. Okay, let's say there are 3 tangents, so 81 is a tangent, 82 is a tangent, and although it doesn't look like it, but 83 is also a tangent. Okay, Yes, sir. अभी अगर और 8 और वो दिख नहीं रहा है, बट अज्यूम कर लो कि T3 भी सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। Yes, sir. अगर tangent Sir, क्या वो बोलो। sir, in this diagram, T3 is not possible. हाँ वो तो पता है मुझे, Oh, okay. करेक्ट, वो तो है, T3 is not possible, बट theoretically वो पूछ रहा है if it was possible तब क्या होता। मतलब वो बोल रहा है कि प्रूव करो कि नहीं हो सकता 3 टेंजेंट। वैसे सोचो, मतलब हाँ मैंने तो एग्जैजरेट फिगर बना दिया जिसमें दिख रहा है कि T3 नहीं हो सकता, राइट, टेंजेंट नहीं हो सकता वो, राइट, Yes, sir. बट if there are 3 tangents then they will, Sir, but then it is a common, like anybody can see from the diagram that it is a secant. So in the NCRT, like, I know it might be something related to this. क्या लिखा है एनसीईआरटी में? Sorry, so in the RS, it's written the tangent to a circle is a special case of the secant when the endpoints of its corresponding chord coincide. Does that have something to do with it? So you have to prove the 2 intersection points of T3, they are the same, no? The point x, right? So maybe you have to prove that like x and y for any given tangent T1, T2, or T3, x and y have to be the same point. And that can only happen in 2 cases. Very good, very exactly, very good, very good. 2 different points, if they very बहुत brilliant भाई, बहुत अच्छा, very good. x y ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव कर रहा है, y ऐसे मूव कर रहा है, तो या तो इधर मिलेंगे, Yeah. इधर मिलेंगे, राइट, Very good, और तो कहीं नहीं मिल सकते। Yeah, you have to. और 3 पॉइंट पे नहीं मिल सकते, राइट। Yeah. Yes. Very crude way of saying, crude नहीं, बहुत ही, in very simpler terms, if your friend is here and you are here, right, friend 1 and friend 2, and you, I mean, you either, if you go both, I mean, if you go anti-clockwise and he go clockwise, then also you meet, then you meet at one point, and if you go clockwise, he goes anti-clockwise, then you meet at another point, right? Yes, so. You can't meet at a third point. Yeah. You can always change the meeting point, but you can't change the number of meeting points. Good. Okay. ये हो गया एक और थ्योरम। इसके बाद एक और थ्योरम है, which is जो तुम्हारे आरएस में थ्योरम 3 और थ्योरम 4 है, वो पूरा प्रूफ कर दिया दोनों, ठीक है, तो देख लेना, ठीक। So when you get it, what is the proof for this? इसका The proof is that x and y cannot meet at more than 2 points at on the circumference. what? So you're saying the proof is that x and y can't meet at more than 2 points. Yes. Yeah, so why? Oh, you are again asking a why to that.
Yeah, like how come? Like I mean, in the crude example, I got it. There are only two possible outcomes. Over here, I don't get why there can't be three. Theoretically speaking. Okay. Uh, how many paths are there between your friend one and friend two? How many paths of going? Two, Huh? two paths. Yeah, Me. one path. ये path ये है. Yeah. And the other path is that. That means you're saying there are friend one and friend two, right? Yeah. Then there are, let's say, n paths between you, 5 paths, 4 paths between you. Hmm. Then you can only meet at 4 points, right? Yeah. If there are paths, you can only meet at 2 points. Hmm. And now, still you're asking why? X and Y can only coincide at 2 points. ये मतलब वो मैंने बहुत बता दिया, x and y can only coincide at 2 points is same as this, right? Yeah. I mean not the same. but- Same as क्या हुआ? Same as this, no? Yeah, okay. Huh. I think it should make sense now. So not really. Oh, like what I understood is this. Whenever X and Y are, the path between them, there are two possible paths. Correct. That means for some reason, there must be only two places where X and Y can meet. Correct. For some reason. For some reason which you're not getting. Yeah, for some reason which I'm not getting. Although it, I don't know. See, listen. मेरे को लग रहा है if x and y, मेरे को ये वाला लॉजिक से तो पूरा समझ में आ रहा है कि नीचे वाला जो बनाया है कि there are two friends, उनके बीच में बात है, तो they have a, मतलब meeting point can only be 4, 5 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता. मतलब on the same line you can have different meeting points, right? But and then I'm counting all of them as one. मतलब एक path पे जो भी meeting point मैं की count कर रहा हूँ. On how many paths they can meet, that is the number of meeting points is on how many paths they can meet. They can meet at 4 paths only, Yeah. right? So that's why I think it should be. So, but then how do you prove, like, see, technically that means wherever you position friend one and friend two, there will always be two paths between them. Yes. That means whenever you position a point with which you are drawing tangents to friend one and friend two, friend one and friend two can, for some reason which I'm not getting, they can only be in a specific 2 points. They can't be like at more than two. They If can't be more than two positions. fixing this point is, then yes, these 2 points are also fixed. Huh. So I'm not getting why they're fixed. I just don't understand. In fact, if your point is anywhere on that lane, Yeah. the point is z like this, then also these 2 points are fixed. No. तुमको सेम एंगल का टेंजेंट चाहिए, वो एक सर्कल होता है एक्चुअली. एक सर्कल होता है जिसका रेडियस होता है 2a cos square theta by 2. उस पे होता है, हाँ, वो लाइन पे नहीं है. देयर आर अदर पॉइंट्स पे सेम टेंजेंट बना के एक can also make, no, it is actually one single point. No, the moment you fix this point, these 2 points are fixed, right? Yes. I don't know. Okay, I'll explain you. Okay, maybe I'll think about it. Yeah, so But your question is good. This is a good question. Okay, like if a point A, if the outside point is fixed, okay, then D1 D2 is fixed. yeah,
But why? हाँ But why? Why? I'll explain you. थोड़ा सोचो, थोड़ा सा ऐसे सोचो. You can. I don't know the मतलब मुझे ऐसे इतना जल्दी theoretical reason तो नहीं आएगा, but practically I can show you. ये सर्कल है. ध्यान से देखना, ठीक है? अगर तुम एक पॉइंट P फिक्स करते हो, उससे एक tangent बनाते हो, तो ये tangent T1 इधर आएगा Yeah. और एक tangent T2 इधर आएगा. Yes or no? Yeah. अगर वो पॉइंट अब एक काम करते हैं, हाँ तुम यही समझो. देखो, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म, नो, तुमको टेंजेंट समझ में आ जाएगा और उसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. तो मैकेनिज्म समझो व्हाट इज हैपनिंग. ओके, अब ये जो लाइन है ना, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है? आप इमेजिनरी लाइन के थोड़ा पास में चले जाते हो, ठीक है? Yeah. जस्ट गोइंग टुवर्ड द सेंटर. तो जो टेंजेंट पॉइंट होंगे, ये थोड़ा They पास, start coming closer. ये दे विल कम क्लोजर, राइट? Yeah. आप थोड़ा और पास में आ जाते हो, यहाँ आ जाते हो, तभी तभी पॉइंट क्या हो जाएंगे, और पास आ जाएंगे. Yeah. आप इतना पास जाते हो कि एक पॉइंट पे क्या होगा, ये खुद ही टेंजेंट बन जाएगा, एक टेंजेंट बनेगा. So one question: the point of intersection in the tangents will they be the same throughout as the point moves closer and closer, or What? the point of intersection, like you keep moving the point from which the tangents are coming closer and closer? Yeah. Will the points of intersections be the same or will they change? Which point of intersection? ये point. Yeah, T1, T1, T2. No. T1. T1 इधर, T1 इधर है, Yeah. T1 डैश इधर है. Oh, so it changes. हाँ, ये पास आ रहा है ना. Yeah. Okay. Yes. Sir. अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और विजुलाइज सोचो कि अगर तुमने ये पॉइंट को, अगर मैं तुमसे ऐसे पूछूं कि एक पर्टिकुलर सर्कल है, सर्कल में मैंने तुमको 2 पॉइंट दे दिए, इसका जो इंटरसेक्शन, इफ वी कीप मूविंग टू द लेफ्ट विल, हाँ, यस, नो नो नो, ऐसा नहीं होगा. यू विल ऑलवेज हैव 2 फैक्टर्स. इफ यू कीप मूविंग टू द लेफ्ट, तो हमेशा क्या होगा, ये 2 टेंजेंट तो बनेंगे ना. Yeah. चले जाओगे, दूर चले जाओगे, बट अगर इन्फिनिटी पे चले गए, थियोरेटिकली इन्फिनिटी पे चले गए, तो वहां से पैरेलल टेंजेंट बनेंगे. थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. ठीक, Hmm. ठीक है. अच्छा, जिनका एंड पॉइंट डायमीटर होगा. So, like my math teacher, like One second. one time we asked him. एक चीज मैं भूल जाऊंगा वरना. The length T1 T2, if you are making a tangent from an external point, the length T1 T2, what can you say about it? Is there a lower limit? Is there a upper limit? The length T1 T2, सोचो, अभी जो उसने हृदय ने जो पूछा ना, उसी से रिलेटेड है. और हृदय कब क्वेश्चन डाउट पूछा करो, मेरे को डायरेक्टली मैसेज मत किया करो. You make the message to everyone, okay? Whether copy paste it and like write it to everyone. So is there a limit? Is there a, so I'm asking everyone, is T1 T2 जो लेंथ है, उसको लिमिट है क्या? कोई अपर लिमिट, लोअर लिमिट? अगर ये पॉइंट, जो पॉइंट P है, वो एकदम सर्कल के पास होगा, तो T1 T2 का लेंथ कितना होगा? देखो ना क्या हो रहा है. Exactly same. It will be about 0, tending to 0, right? Yeah. Is it getting it? Yes or no? Hello. Yes. दूर था तो ये पास हुआ, तो ये हुआ T1 T2, राइट? हाँ, Yes, sir. और ये T1 T2 ये है ना. Yeah. तो अगर पॉइंट P पास में आएगा सर्कल के, राइट जाएगा, तो T1 T2 लेंथ विल बी टेंडिंग टू 0. Yeah. और अगर T1 T2 लेफ्ट में जाएगा, दूर जाएगा, तो T1 T2 विल बी टेंडिंग टू विच लेंथ? Infinity. अरे नहीं, इन्फिनिटी कैसे है? T1 T2 है तो पॉइंट सर्कल पे ही ना. Hmm. पॉइंट P को दूर लेके जा रहे हो तो टेंजेंट पैरेलल हो जाएंगे. Yeah. तो T1 T2 क्या बन जाएगा? डायमीटर बन जाएगा. So within the length of the tangent side you're asking, right? Not the distance between. लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं पूछ रहा हूँ मैं, T1 T2 लेंथ पूछ रहा हूँ. Oh,
Yeah, it'll tend towards the diameter. It tend towards diameter, right? Yeah. तो look very good. T1, T2 is less than 2R and is greater than 0. ठीक है? Hmm. Is everyone getting it or not? Has everyone got it? Yes, sir. अब एक चीज और सुनो. अच्छा तुम कुछ पूछ रहे थे शिवांश. So my math teacher said like lines at infinity. I have no clue why this is relevant, but lines at infinity, they it's not like they meet at lines that are parallel. They never meet at infinity. They just don't meet. So isn't that statement about like वो जो वो होता है ना देखो नंबर सिस्टम इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट ही वही है कि इट इज अ सब्स्टिट्यूट वर्ड फॉर नेवर एंडिंग. ओके. yeah. So when you are saying कि what is this? Is the number system infinite or number system does not end? It doesn't and it's infinite. Same thing. Yeah. ठीक है ना? Yeah. Same thing. You are asking the same doubt कि number system infinite बोल रहे हैं कि don't doesn't end बोल रहे हैं. Yes, so got it. वो मैं है ना. Hmm. Okay. ठीक है. आई थिंक वी शुड डू. अभी तो जो अपने बाकी थ्योरम्स है ना वो तुम अपने आप करना, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा. वो सब वैसे वाले थ्योरम्स हैं यू नो कि प्रूव दिस प्रूव दैट. ठीक है. वो बाकी तो अभी मैंने शायद थ्योरम 5 तक कर लिया है. ठीक है. तो इन दिस लेक्चर में 5th थ्योरम और बता देता हूँ सो दैट बस. ठीक है. थ्योरम 5 सुन लो आरएस वाला, उस पर प्रॉब्लम्स करेंगे. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. देखो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब they have the same center. ओके. रेडियस अलग अलग. तो बस इसका सेंटर पॉइंट ए ओ है. तो थ्योरम ये है कि द chord of the larger circle which is bisect the point of contact कि बड़े वाले का बनाओगे which touches the smaller circle. ठीक है. is bisected at the point of contact. तो उसका ऐसे है कि भाई अगर ये कॉर्ड है तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है. भाई कॉर्ड है कि नहीं बड़े सर्कल का. ये सुनो. बड़े सर्कल कॉर्ड अगर इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है छोटे वाले को तो वो छोटे वाले का टेंजेंट होगा. ये सब टेंजेंट हो गया ना. भूल जाओ कि वो बड़े वाले का कॉर्ड है. वो एक ऑर्डिनरी लाइन है जो सर्कल का टेंजेंट है. ये सुनो. और अगर वो ग्रीन लाइन टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल को तो ऑफ कोर्स रेडियस परपेंडिकुलर है उसके. राइट. और अगर ये रेडियस परपेंडिकुलर है तो अब छोटे वाले को भूल जाओ और इसे सोचो कि बड़ा वाला सर्कल है उसका कॉर्ड है और कॉर्ड से परपेंडिकुलर बनाया रेडियस तो ऑफ कोर्स वो बाइसेक्ट भी करेगा ना. ऐसा नो समझ में आया. ठीक है. सिंपल इजी इनफ. ठीक. अभी कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं. मैं तुमको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ. वन एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 8A. ओके. बाय द वे यू 8A करना है. ठीक है. और 8A को मैं बता देता हूँ कुछ क्वेश्चंस. यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑफ एक्सरसाइज 8A. एवरीथिंग ऑफ 8A. मैं तुमको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे करते हैं. So question number 1. Shivansh, keep your video on. Okay.
A point P as a distance from center to center. Question number 1. Distance 29. Oh, this is 29. And circle of radius is this is 20. Okay. पूछ रहा है what is the length of tangent? What is PT? PO square. So that will be Pythagoras. Yes. Good. First, 29 square is equal to PT square plus 20 square. 29 square minus 20 square is equal to PT square. Whenever you have do things like this, never calculate the whole square. Instead, do a minus a plus b. This is 49 into 7, right? 7 into 9. Sorry, 9 into 49. So therefore, PT is root 7, is root 3, it is 21. Okay. Fine. Is this okay with everyone? Everyone, please do question number 2 and 3 and send it on the group. Sir, I don't have the book. Can someone send the pictures? I'm sharing the screen with you so that you can see question number 2 and 3. Okay.